We'll discuss rotate instructions. First instruction in this is ROL, which stands for rotate left the contents of specified register. See, the instruction is like this. ROL. This is the instruction syntax. ROL BL, 1 टाइम रोटेशन के लिए ऐसे लिखेंगे जैसे कि शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस के केस में लिखते थे. मल्टीपल टाइम्स रोटेशन के लिए हम यहाँ पे एक काउंट रजिस्टर ले लेंगे, ठीक है, CL, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे लिया है. सो द इंस्ट्रक्शन सेज रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड द कंटेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड रजिस्टर 1 टाइम. ओके, सो let that BL contains the value 10101010 and here's the carry flag. तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है दैट विल गो इनटू द कैरी फ्लैग एंड सेम बिट विल कम एट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन एज वेल. Rest all the bits will be shifted towards the left hand side by 1 bit position. Okay, so keep in mind that this leftmost bit will go into the carry flag and it will also come at the least significant bit position. Next instruction is rotate right. Rotate towards the right hand side the contents of the specified register 1 time. This is how the instruction will be written. Let the BL register contains the value this 10101010 is the carry flag. So this rightmost bit, which you also call least significant bit, this goes into the carry flag and same bit comes at the most significant bit position as well. Rest all the bits are shifted towards the right hand side by 1 bit position. Alright, next is rotate through carry flag towards the left hand side. Now see what happens in this case. This is the instruction RCL BL, 1, and let us assume that BL register contains the same value 10101010, and let us assume that carry flag is reset. Now what will happen? The leftmost bit will go into the carry flag. The bit in the carry flag will come at the least significant bit position. Thus we are involving the carry flag bit in the rotation process. Therefore the instruction is rotate through carry flag towards the left hand side. कैरी फ्लैग में जो भी बिट है, मैंने इस केस में एज्यूम किया है कि कैरी फ्लैग रीसेट है. अगर सेट होता तो कैरी फ्लैग में वैल्यू होती 1, तो 1 रोटेट होकर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पर आ जाती है, ठीक है. सो अंडरस्टैंड अगेन, द लेफ्ट मोस्ट बिट विल गो इनटू द कैरी फ्लैग, द बिट इन द कैरी फ्लैग विल कम एट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन. Rest all the bits will be shifted towards the left hand side by 1 bit position. This is how the instruction works. Next instruction is RCR. In this, the direction of rotation has been changed. Rest all the things will remain same. Rotate through carry flag towards the right hand side. This is what the instruction says. You have to rotate the contents of BL register 1 time. So 1 is written here. Don't write 01H. Simply write 1. Okay. Let us assume that BL register contains the value 10101010. So the rightmost bit, that is the least significant bit, will go into the carry flag. The bit in the carry flag will come at the most significant bit position. Rest all the bits will be shifted towards the right hand side by 1 bit position. Okay, so rightmost bit थी 0 गया कैरी फ्लैग में. कैरी फ्लैग में पहले 0 था, वो वाला 0 आ गया MSB पोजीशन पे. बाकी की बिट्स राइट हैंड साइड की तरफ इस तरह से शिफ्ट हो गई. सो दीज आर द 4 रोटेट इंस्ट्रक्शंस विच यू हैव टू स्टडी. A few instructions are left to be discussed, which we will be discussing in tomorrow's class, and that will end the instruction set of 8086 microprocessor.